गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सीखेंगे कैसे रिसर्च फील्ड में और कोई भी ऐसे आपका क्रिएटिव काम के लिए या अवतर क्रिएट के लिए टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए और कोई भी ग्राफिक वगैरह डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए कैसे आप एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्टली मोस्ट कॉमन तो चैट जीपीटी है। यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से वॉइस के थ्रू भी बोल सकते हैं और आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके नीचे आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है कि परप्लेक्सिटी। दिस परप्लेक्सिटी, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और ये मेनली रिसर्च वगैरह करने के लिए आपका ये सब यूज कर सकते हैं। डीप थिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो देन आता है ग्रुप। ग्रुप भी बेसिकली यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोई भी फील्ड वाला काम के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड देन डीप सर्च भी है, क्रिएट इमेज भी है, ये सब आप थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पिलट भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इमेज क्रिएट के लिए यूज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई टॉपिक के लिए, इम्प्रूव राइटिंग के लिए, राइट फर्स्ट ड्राफ्ट एंड प्रेडिक्टर एंड रीराइटिंग क्लासिक ड्राफ्ट टेक्स्ट, गेट एडवाइस। एंड देन आता है पेपर पर। सो इसके लिए बेसिकली यहाँ से आप टेक्स्ट ओके यहाँ से मेनली आप रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश मतलब अपलोड वगैरह करके और अदरवाइज ये रिलेटेड टॉपिक सर्च करके आप अगर यहाँ से सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक देके तो ये आपको कुछ मतलब इससे रिलेटेड जो भी पेपर है उसका लिंक वगैरह और किसने क्या बोला है ये सब भी आपको पूरा विद साइटेशन आई थिंक इसको प्रोवाइड करेगा ये। Then आता है elicit. Elicit AI भी same is generate high quality research brief based on a process inspired by systematic review. Then आता है undermine is research to win an AI system that carefully explore the scientific literature for you and find exactly what you need no matter how complex. And then this is research debit mainly if one knows about this one and ये mainly आपका जो सर्च mainly ये research database gives the endless list of research paper and beyond traditional literature review technique. Instead, you can see papers, how papers connect. So here आपको ऐसे ऐसे शो करेगा रिसर्च बिट में आके कैसे पेपर्स कनेक्ट है। एंड दिस इज द नोटबुक एलएम का भी आप देख सकते हैं। रिसर्च एंड थिंकिंग पार्टनर ग्राउंडेड not accepted your AI for research partner upload source instant insight and see the source not just the answer. Then pod.com यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। ऑफिशियल बोट, स्क्रिप्ट बोट, सर्च बोट, इमेज जनरेटेड बोट, वीडियो जनरेटेड, ऑडियो जनरेटेड बोट, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आता है मार्लिन। मार्लिन भी आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो देख पाएंगे कि मार्लिन क्या काम करता है। तो इमेज chat away. So one click answer real time Marlin भी मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मार्लिन को। फिर आता है semantic scholar AI, a free AI powered research tool for scientific literature. फिर scholarc.com summarize, analyze and organize your research. This is Trinka AI for grammar and writing. The write or not for so grammar checking purpose this one can be used. Then this one is Conquer AI is create the customize quizzes in second with the Conquer AI. And then Jenny AI. Jenny AI also is basically you can upload any article and question as by itself. And like from here you can scroll and can check features. And this is natural leader AI text to speech. This is our discovery, same things. You can upload and ask questions from this one. You can upload any paper, then you can ask any questions regarding that paper. This is Unravel AI, Triple AI, and you can see AI text summarize and article organization. These all features
is included. Julius AI is for AI data analysis, and this AI is ultimate AC AI, paper AI, and academic research writing AI system. This one is so Flinet, find sources in seconds, save your sleep. So yes, you can use this one. Napkin AI is just get visuals from your text. This is Hazen. It's free. Your story AI video generator. And then this is Midjourney AI. It's independent research like 1 million. So it's basically a popular tool online that lets user to create pictures without needing to learn how to code. This is Remini AI. This is only photo video. And then this also is Breed Flower, and this also is it can be used for video video generation. And this is copy.ai is free AI writing generator, free marketing email generator, free cold email generator, and free AI paragraph rewriting cover. So this is not on Vimeo, and this is free AirTOR scam detector. Here this is Logo AI. It's hyper realistic AI voice generator that captivates your audience. Then Film.ai is our most exclusive voice AI. This is speech mark, you online text to speech. And then this is Sora AI is basically a video generator, and then extra video generation creation. So you can scroll and you can just see the features. And this is Clone.ai is for coding. And then this is Flux.ai creative tool on Flux. So create your image video all in one. Okay, here advanced image video tools. And this one is AI. This one is also from this into screen same things is there. So this tool can be used for research for academic purpose, but हमेशा आपको ये सब यूज करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए AI का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी गलत काम के लिए इसको इस्तेमाल ना कीजिए, और जितना लिमिटेड चीज हो सके AI को मतलब हेल्प आप ले सकते हैं, बट कोई भी ऐसे क्रिएटिव माइंडसेट आपको रखना है। बस ऐसे नहीं कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया तो AI डिटेक्ट कर भी है तो AI जनरेट कंटेंट है ये बता देगा कि ये आप AI जनरेट करके लिखे ये सब बता देगा। सो AI जनरेटर काफ़ी सारा AI डिटेक्ट करने वाला काफ़ी सारा टूल है। इवन प्लेगरिज्म भी फ्री होना चाहिए कि आपने खुद से लिखा है, किसी का कॉपी पेस्ट की कॉपीराइट वही ना आए। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और AI का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी गलत काम के लिए नहीं यूज करिए, और जितना लिमिटेड हो सके आपका यूज करिए। आपका ब्रेन का ज़्यादा यहाँ से करे, बस AI आपको हेल्प कर सकते हैं ये सब थोड़ा बहुत आपका काम आसान करने के लिए आपको आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ का मदद ले सकते हैं ये सब AI टूल्स का। बस आपको हमेशा कॉन्शियस और केयरफुल रहना चाहिए बस AI यूज करने के टाइम। और कोई भी प्राइवेट फोटो वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड ना करिए तो ही बेटर होगा। एंड ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रिसर्च एकेडमिक पर्पस के लिए, आइडिया ले सकते हैं आप AI टूल्स का भी मदद से। आपका काम थोड़ा बहुत आसान होगा, टाइम सेविंग भी होगा। सो ये सब टूल्स आप यूज कर सकते हैं। Okay, that's all for today. Thanks for watching.